Hello, good morning dear students. Welcome back to the chemistry class. In the last class, we have discussed about a rate of reaction, its type, average and instantaneous rate of reaction. We have explained by using graphical representation and differential equations and some related numericals. So now we'll discuss about the next concept, that is factors affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate. Factors affecting the rate. Factors affecting the rate of a reaction. Rate of reaction. Dear students, as already you know that there are a number of factors which controls the rate of reaction, a speed of a reaction, or we can say the speed or the velocity of reaction depends upon the number of factors. Let us consider some of the factors which affecting on the rate of reaction is. First one is the speed here. Speed of the reaction depends upon concentration of reacting species, or we can say reactants, concentration of reactants independently. And the second factor, it depends upon the condition of temperature and pressure. So it depends upon temperature and pressure. Temperature and pressure. The third factor, concentration, nature of reactants, Fourth one, surface area. Fifth one, exposures to the radiation. Sixth one, catalyst, etc. Some of the factors I have considered here. Now, predict how the rate varies with these factors. How these factors controls the rate of a reaction. So let's begin with the first one, concentration of reactant. Before starting this, rate of a reaction के बारे में थोड़ा note कीजिए. Rate of reaction, just recall the concept. As we completed rate of reaction, average and instantaneous rate. So this is concentration terms, concentration of either reactant or product versus time in this curve. So this is the one curve and this is the second curve. So from this graph we can conclude that the curve, first curve, this curve represents products curve, whereas this represent reactants, products and reactants. Look at this curve. You can find that when time t is equal to 0, concentration of reactant is more. So as the time increases,
the concentration of reactant go on decreases, and after some time it remains same. That means further decrease in the concentrations we cannot get. Similarly, increase in the concentration with respect to time for product, it increases, and after sometimes it also remains constant. It do not vary with the time. So at the beginning when concentration of reactant is more, the decrease in the concentration is also more. But as the time increases, the decrease in the concentration is less and it remains same for both reactant as well as product. For product concentration increases, reactant concentration decreases. So इसके बारे में हमने स्टडी किया है लास्ट क्लास में. Now let's explain the points. If we are going to explain the first point, number 1, nature, so concentration of reactant. Concentration of reactant in product. Let us consider a general reaction. Consider the general reaction. Reactants are converted into product. Reactants are converted into product. Simple example, concentration के ऊपर कैसा डिपेंड है? How the speed of a reaction is depends upon the concentration. How it depends? Concentration of reactant ज्यादा हो तो speed of reaction क्या होता है? Suppose if I assign some homework, मान लीजिए एक 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है आपको, 2 क्वेश्चंस, कितना? 2 क्वेश्चंस, only 2 questions I have given. So immediately solve करते हैं या उसके लिए आप टाइम लेते हैं? मान लीजिए कि मेरा नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया आपको, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इमीडिएटली विद इन द क्लास, आफ्टर द क्लास दे विल कंप्लीट द होमवर्क, whereas some of the students they will take it to the home and घर में बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं. Some of the students क्या करते हैं? अभी क्लास कल है, आज क्यों, कल ही किया तो भी चलेगा, सर आने से पहले बैठ के किया तो भी चलेगा. तो क्लास में आने के बाद जब मैं रेगुलर क्लास में जब डाउट होमवर्क पूछे तो बाजू स्टूडेंट्स का नोट्स देख के वहां पर लिखते हैं. इफ असाइनमेंट आर होमवर्क क्वेश्चंस, if it is assigned with some punishment, if you are not doing the assignments, if something punishment मुझे देना है आपको, so जब आपको punishment है बोले तो आप क्या करते हैं? इमीडिएटली जल्दी सब लोग सॉल्व करते हैं. तो मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन दिया तो रिएक्शन इमीडिएट स्टार्ट होते हैं, नहीं तो स्लो है. सपोज मैंने 100 क्वेश्चन असाइन किया तो कंपलसरी मुझे कल के क्लास में पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. तो क्या करते हैं आप लोग? जब 100 क्वेश्चंस है तो एक दिन में नहीं होता बोल के आपको भी पता है, तो आप इमीडिएटली आफ्टर द क्लास बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन इज स्टार्टेड इमीडिएटली और वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है आपको. एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, 1 क्वेश्चन है लेजी रहते हैं आपको, 10 क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट करते हैं, और थोड़ा इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिकली फास्ट. अब वो रिएक्शन कैसा है? जब 100 क्वेश्चन है स्टार्टिंग बैठ के आप सॉल्व करते करते तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक करते हैं. जब 25 क्वेश्चन हुआ थोड़ा बहुत 25 हुआ ना, चलो ठीक है बाद में और थोड़ा करेंगे, वहां पर थोड़ा स्लो डाउन हो गया. 90 क्वेश्चन तक किया, लास्ट 10 क्वेश्चन है और फिर स्लो हो जाएगा. अभी 10 क्वेश्चन बचा है, चलो ठीक है अभी 2-3 क्वेश्चन बचा है, तो ओनली 2 to 3 क्वेश्चन आर देयर, विल सॉल्व इन द प्रॉब्लम बोल के आप स्लो करते हैं. तो ये क्या हो रहा है? इनिशियली रेट तो स्टार्टिंग अब 10 पेज लिखना है आपको, 10 पेज लिखना है तो स्लोली अब 10 पेज का क्वेश्चन है तो यू हैव स्टार्टेड द रिएक्शंस. सो एक पेज लिख दिया, कंप्लीट यहाँ तक है सारा. तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीजेस. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन decreases, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. Very simple ways we can say, as the concentration of reactant increases, the rate of reaction क्या होता है? Rate of reaction also increases. So here we will represent as the concentration of reactant in the first case, in this case
concentration of reactant shall I write directly proportional to rate of reaction. Rate of reaction directly proportional. इसका मतलब क्या हुआ आपका, concentration increase हुआ तो rate of reaction increase होता है. First point we have completed. First point completed. As the concentration of reactant increases, rate of reaction also increases. Concept clear? Okay, now let us consider the second factor, temperature. How the temperature affect the rate? घर में कभी आप राइस बनाया होगा, कैसा बनाते हैं राइस? खाना बनाया ना? ओके, कैसा बनाते हैं राइस? नॉर्मली यू हैव टेकन अ वेसल, थोड़ा पानी, राइस, चावल और क्या बोलते हैं उसको, सम साल्ट, समथिंग यू हैव एडेड, व्हाटएवर द रिक्वायर्ड थिंग यू हैव एडेड. ऐड करने के बाद ऐसे ही एक छत पे रखे तो आपको राइस हो जाएगा. हो सकता है इट टेक्स अराउंड 1 month और 2 month, क्योंकि टेम्परेचर कम है. उसको थोड़ा हीट किया तो नॉर्मल कम टेम्परेचर में, नहीं तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस थोड़ा हीट में वेरिएशंस करके देखिए कैसा होता है आपका, उसका स्पीड देखिए आप. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. सो usually the rate of reaction is directly proportional to temperature. Rate of reaction directly proportional to temperature. So here I am writing rate of a reaction. Rate of reaction is directly proportional to, first one, concentration of reactant. ये first factor है, directly proportional to concentration of reactant, and second point is directly proportional to temperature. Directly rate of reaction is directly proportional to temperature. Example आपको clear होगा. As the temperature increases, rate of reaction increases. Now as the pressure increases, rate of reaction क्या होता है? Again it is increases, क्योंकि जो राइस आपने बनाया ओपन वेसल में किया तो फास्ट होता है या कुकर में किया तो फास्ट होता है? कुकर में 100% थोड़ा रिएक्शन फास्ट होता है, बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर थोड़ा ज्यादा क्रिएट होता है वहां पर. सो देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. Rate of reaction is directly proportional to pressure. The next concentration, temperature, pressure व nature of reactant. अब नेचर के बारे में देखेंगे. देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इफ सपोज ये प्लस बीबी, ये प्लस बीबी, when these two are undergoing reaction, ये दोनों reactant है to gives rise to the product. यहाँ पर product मिल रहा है आपको. अब nature, if the interaction between the AA molecule and BB molecules are strong force of attraction रहा तो, if the bonding is strong between AA and BB, then the rate of reaction is slow. Am I right? Ionic reactions are fast reactions. We have considered some of the neutralization and precipitation reactions which are very fast, which takes place at the rate of 10 to the power minus 12 to minus 16 per second. Per second. Seconds. Such reactions are carried in a short period of time of the order 10 power 12 to 10 to the power of 16. उतना फास्ट है वो. क्यों फास्ट है? बिकॉज उसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, वो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड ब्रेक करने का नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी दे कंटेन आयन्स. बॉन्ड वहां पर बहुत वीक है. वीक बॉन्ड रहा तो रिएक्शन फास्ट हो जाए, बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड डू नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑलरेडी इट कंटेन सम आयन्स इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शन. whereas molecular reactions are slow because it involves the cleavage of bond first and then the reactions are takes place. So therefore nature of reactant के ऊपर dependent है. Rate of reaction is directly proportional to inversely proportional to bond strength. So it is directly proportional to, inversely proportional to bond
bond strength of a reactant, bond strength of reactant. बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड क्लीवेज करने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा. नेचर ऑफ रिएक्शन. सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड? सरफेस एरिया, सपोज इफ यू बर्न अ पीसेस ऑफ वुड एंड ए लॉग ऑफ वुड. वुड का पीस है, पीसेस, उसे स्मॉल पीस करके अगर आप बर्न किया तो रिएक्शन फास्ट होते. नहीं तो बाय टेकिंग ए लैग ऑफ, फॉर एग्जांपल इट इज ए लैग ऑफ वुड, इसे बर्न कीजिए तो इसका ये सरफेस एरिया देखिए कितना है सरफेस एरिया. नाउ इफ आई ब्रेक दिस, इसे मैंने ब्रेक किया तो देखिए ये दोनों न्यू सरफेस आर फॉर्म, दीज टू आर न्यू सरफेसेस. तो इसे ब्रेक किया तो टू न्यू सरफेस आर फॉर्म, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है. तो इसे और एक बार ब्रेक किया तो वन मोर टू सरफेसेस आर फॉर्म. तो स्मॉलर द पीस, देखिए पीसेस ज्यादा किया मैं, स्मॉलर सरफेस, स्मॉल मॉलिक्यूल किया तो सरफेस क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस. सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है. बर्निंग ऑफ वुड पीसेस इज फास्टर देन a log of wood. So therefore we can say rate of reaction is directly proportional to surface area, is directly proportional to surface area. Next, exposure to the radiation. As you know that formation of HCl, H2 plus Cl2 takes place only in the presence of HCl, only in the presence of sunlight. Formation of HCl in the presence of sunlight. ये जो reaction है, when these two reactions takes place to form HCl, H2 plus Cl2, but the rate of formation of HCl is very slow. When it is exposed to sunlight, radiation, then the rate of reaction becomes fast. So in this case also, the rate of reaction is directly proportional to the radiation. Radiation is a फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई करें तो रिएक्शन फास्ट होगा. कैटलिस्ट, सो हियर व्हाट इज द कैटलिस्ट? Catalyst means what? Catalysts are the substances which alter the rate of reaction without involving in the reaction. वो substance reaction में involve नहीं होते वो, but it alter the rate, speed change करते हैं. Such substances are known as catalyst, and in the presence of catalyst the rate of reaction alter. It is the best word, alter, catalyst. So here usually catalyst increases, enhances the rate of reaction. वहां पर negative catalyst भी है. Some of the substances which decreases the rate of reaction, whereas some of the substances, that means catalyst का दोनों टेंडेंसी है. कैटलिस्ट रिएक्शन रेट इंक्रीज भी कर सकता है नहीं तो डिक्रीज भी कर सकता है. सो यूजुअली विल कंसीडर कैटलिस्ट बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कंपलसरी पॉजिटिव कैटलिस्ट रहना चाहिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगर नेगेटिव कैटलिस्ट रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन decreases. So therefore in general catalysts are the substances which alter the rate of reaction. बोलते हैं इसका definition catalyst. So these are the factors which affecting the rate. देखिए in all the case some common point is rate of reaction is directly proportional to these factors except bond strength. Bond strength एक ही inversely proportional है, बाकी का पूरा directly proportional है. As in the presence of these, in the presence of catalyst, radiation, as surface area increases, temperature, pressure increases, concentration increases, the rate of reaction also increases. So this is about the factors affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. Now in the next class, we'll consider or we'll start the next concept, concentration dependent rate. That is law of mass action and rate constant के बारे में स्टडी करेंगे. Please note this is a small concept. यहाँ पर डायरेक्टली आपको थ्योरी में अगर क्वेश्चन पूछा तो आप जस्ट पॉइंट्स नोट करना पड़ेगा.
mention the factors which are affecting the rate of reaction. Just heading लिखे तो भी चलेगा. If particularly how the concentration of reactants affect the rate of reaction, or explain the effect of temperature on the rate of reaction. ऐसा पूछे तो individual आपको लिखना पड़ेगा explanation. So here in case of temperature, one more point we can note here. In general, approximation है. If the temperature increase by 10 degree, the rate of reaction approximately double or triple बोलते हैं. Temperature 10 degree rise किया तो rate of reaction double होते हैं. जितना speed था उसका speed double होते हैं. So temperature coefficient बोल के definition आते हैं आपको. Next में one more times we are going to study. You can note here also. As the temperature increases by 10 degree, the rate of reaction becomes double. That is known as temperature coefficient. उसका ratio लेते हैं वहाँ पर. So these are the factors. Please note this. In the next class, we'll discuss about the next concept. Thank you.